इस बंधन में वह हृदय विशाल है। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। तो आज का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो मैं हमारी शिक्षिका स्वीटी मांद्रेकर जी से विनती करती हूँ कि वो हमारे अतिथियों को मंच पर आमंत्रित। IAF ऑफिसर मिस्टर बालचंद्र अमोनकर। In medical school health since last 13 years in DHS. Please join me in appreciating our healthcare officer, Dr. Yogesh Desai, as we salute his impeccable dedication towards mankind. I request Teacher Manvi to please present a token of appreciation to Dr. Yogesh Desai. Present here, it's my honor to introduce our second esteemed guest, Mr. Rupesh Sawant, Station Fire Officer from Directorate of Fire and Emergency Services. With 18 plus years of brave service, Mr. Rupesh Sawant has dedicated his career to protecting our communities from dangers of fire and emergency situations. As a fire officer, Sir has demonstrated exceptional courage, leadership and expertise in emergency response, fire prevention and safety education. Their selfless commitment to public safety has saved countless lives and properties. Please put your hands together in appreciating Mr. Rupesh Sawant sir, a true hero and guardian of our community as we recognize his valor. I request Teacher Kanchan to please present a token of appreciation to our DFES officer, Mr. Rupesh Sawant. Our next esteemed guest, Mr. Mahadev Pednekar, PSI, with the Goa Police, Panjim Police Station. Sir has demonstrated unwavering commitment to upholding the law, protecting citizens, and making our community a safer place. As a respected and decorated officer, Sir has shown exceptional bravery, leadership, and expertise in all possible cases handled by him. Made big criminal cases, investigation, maintaining law and order, community policy, etc. His tireless efforts have made a significant impact on reducing crime and improving public safety. Please join me in appreciating a true guardian of our community as we recognize his service, his dedication, his selflessness, attitude, sacrificing most of his personal celebrations, occasions for us all in order to safeguard us. I request Teacher Anisha to please present a token of appreciation to our officer. But not the least, I feel immense honor and pride in introducing our guest. With 15 plus years of distinguished service coming from education and freedom fighters background, it was in his blood to do something for the motherland. So at a very young age, Sir decided to join armed forces. Opportunities came on an auspicious occasion where he came across the advertisement about Indian Air Force selection, and that was life-changing step for him. He cracked the examination and was selected after training, was posted in SAM-2 Missile Squadron in Agra and SAM-3 in Delhi and many others part of the state in our nation. Apart from this, Sir has actively participated in desert car rallies, represented India Air Force football team, helped many disadvantaged students gain educational benefits, and the count is endless. As a seasoned air warrior, he has flown numerous missions, honed their skills, and has been instrumental in shaping the Indian Air Force's capabilities. He has demonstrated exceptional courage, leadership, and dedication to defending our nation's skies. His selfless commitment to protecting our country and its citizens is truly inspiring. We feel proud and honored
to have Sir Amonkar as our guest today. Let's all together give a huge round of applause while I request Teacher Usha to appreciate our ex-Indian Air Force officer, Mr. Balchandra Amonkar, with a token of love and respect from us all. We do salute all our officers for their hard work and dedication. Raksha Bandhan. On the occasion of Raksha Bandhan, we have couriered a Rakhi for our Honorable Defence Minister of India, Sir Rajnath Singh Ji, with a thank you note. We have also sent Rakhi to our dear soldiers who protect us on day and night on the borders. Besides this, we the teachers of GPS Chitore have made a small selfie point for you all to capture your perfect moment and keep it a remembrance as a takeaway. At the end of the program, you all can take a selfie. तो अभी हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं विनंती करती हूँ कि हमारे स्कूल की छात्राओं वह आगे आ जाए। विदिशा गावड़े। अब हम हमारे इस मुख्य अतिथियों का विनंती करती हूँ कि वे अपने मन की 2 शब्द व्यक्त करें। जय हिंद। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। हम क्या बना रहे आज के अतिथि जितने देखो यूनिफॉर्म में हैं। ये लोग क्या करते हैं आपकी क्या करते हैं ये लोग? रक्षा करते हैं, इसलिए हम लोग हैं। और सबसे पहले तो आई शुड थैंक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट टू द टीचर्स फॉर हैविंग सच अ विजन to do something for the people who are there. This is indirectly is going to all the force, the person for police department, the officer, the forest, because this conveys a message to everyone. और लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए क्या हम मना रहे हैं आज? रक्षाबंधन। रक्षा यानी क्या है? सुरक्षा। एक भाई के हाथ में एक बहन राखी बांधती है या नहीं? किस लिए बांधती है? कि कोई अलग एक मार दे तो वो भाई आके उसको मारेगा? नहीं, ऐसे नहीं है। ये प्यार से एक भाई बहन का रिश्ता जो जुड़ा हुआ है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, उसे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग खाली यही नहीं है, हमारे जो आजू बाजू में जो पेड़ पौधे एनवायरमेंट हम लोग कहते हैं नहीं, एनवायरमेंट, उसकी रक्षा करना किसका काम है? अभी आपको चॉकलेट दिया जाएगा, अब चॉकलेट खाने का तो जो रैपर है वो आप क्या करोगे? डस्टबिन में। वो सपोज हम लोग नदी में डालेंगे, नाले में डालेंगे तो क्या होता है? गाय भैंस खा लेती है ना, वो बीमार पड़ती है, तो उनकी रक्षा नहीं होती है। तो हम लोगों ने रक्षा करनी चाहिए हमारे जो पर्यावरण के बारे में, हमारे समुद्र, हमारी नदियां, हमारा आजू बाजू का परिवार, हर चीज में हमारी रक्षा करनी है। आज तो अभी हम लोग कहते कि भाई बहन की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है, बहन ने भाई की रक्षा हो जाती है। आजकल तो बहनें ही सबसे ज्यादा ऊपर चली गई, तो उनकी बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भाई की रक्षा करे। और ये सब करने के लिए आपने क्या करना चाहिए? अच्छे नागरिक बनना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए, है या नहीं? माता पिता की आपसे सुनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए हमेशा। आज के दिन नहीं, हमेशा अपने भाई के साथ रहना चाहिए। बहन ने क्या हो गया स्कूल में आज, भाई ने जाके बहन को बोलना चाहिए, बहन ने भाई को बोलना चाहिए। ऐसा ही आपका भाईचारा चलते रहना चाहिए।
last but not least, this has been an excellent selfie point which exhibits all and doing this sort of thing, it is definitely school will reach to the greater height. This sort of teachers needs a big salute. Thank you so much. Jai Hind. तुमकां तुम्ही आमकां राखी बांदली आमकां खूब बरें दिसलें की कोण तरी आमकां पळयता आमचे सगळे जे आमचे फोर्स आसा आर्म फोर्स आमचे पुलीस फोर्स आसा आमचे फायर फोर्स आमचे सर आसा सगळे आमी लोक सगळे काम करतात पण आमी चडशे तांकां एप्रिशिएट करप पावना पण आज मॅडमीन आनी तांच्या टिचरीन तुमच्या टिचरींनी सगळ्यांनी हो प्रोग्राम हाडलो आनी जे जाग्यार तुमकां दाखोवन दिलें की हे बी लोक काम करता आमच्या खातीर तुमचोय बी सपोर्ट जाय जेन्ना आमी म्हणटा आमी रक्षा करता तेन्ना तुमी सरान सांगला तुमी बी थोडे सपोर्ट आमकां करपाक जाय जशें आमच्या हेल्थ वॉर्डेजान आमी जेन्ना उलयतात जेन्ना दोतोर उलयता आमी दोतोर कितें म्हणटात दोतोर आमी तुमकां ट्रीट करतात आमी मेडिसीन दिता तुमकां केन्ना बरें ना जाता पूण आमकांय बरें दिसना तुमकां सदांच मेडिसीन दिवपाक इंजेक्शन दिवपाक सो तुमी कितें करपाक शकता तुमची रक्षा करपाक स्वताची रक्षा करपाक कितें करपाक शकता तुमी एक म्हटल्यार साफ सफाई कोणाची स्वताची आनी आमच्या हे एनवायरमेंटाची ही दवरपाक जाय दुसरी स्वताची कशें दवरता तुमी सद्दां 2दा ब्रश करपाचो सकाळ फुडें आनी रातचो न्हिदपाक वयचे पयलीं करतले सो आमचे दांताचे प्रॉब्लेम चडशे सॉल्व जातले न्हाता डेली न्हावपाक जाय न्हाताले आमी सद्दां न्हावता तशेंच न्हावपाक जाय सद्दां येस सो आमचे खुबशे प्रॉब्लेम स्कीन प्रॉब्लेम हे सगळे आमचे क्लियर जातले मागीर आनी कितें करपाक जाय आमी आमची नाकटां आसता पळय ती कट करपाक जाय तितूंतल्यान आमकां खुबशे जर्म्स भितर वता आनी हेस आनी व्हायरल दुयेंसां खूब आसा सो आमी शिकता आसतना खोकता आसतना नाक काडटा आसतना आमी आमचे हँडकचीफ यूज करपाक जाय किंवा आमचो स्लीव्स यूज करपाक जाय सो आमचे हेल्थ आमचे कडेन बरें उरतलें सो आमी जेन्ना भायर उडयता कितें वस्तू उडयता जाल्यार सरान सांगलां तर सांबाळून आमी सेग्रिगेट करून उडोवपाक जाय डस्टबीन यूज करपाक जाय आमी जशें क्लासीन यूज करता तशें आमी घरा कडेनूय बी यूज करपाक जाय करतले आमी येस सगळे भायर उदक साडपाक दिवपाक ना भायर उदक साडल्यार कितें जाता भायर उदक साडल्यार डेंग्यू कोणें म्हटलो येस डेंग्यू जाता आमी खुबशे पयल्यान आमकां खुबशे आमची भुरगीं वयता आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक कितें जाता प्रॉब्लेम जाता हें आमकां नाका पळोवपाक म्हणून आमी कितें करपाक जाय आमी उदक भायर साडपाक दिवपाक जायना तितून आमचे मलेरिया डेंग्यू हे सगळे चिकनगुनिया हे सगळे दुयेंसां जावपाक शकता आमच्या भितर सो ते हें करतले जाल्यार आमी आमची साफ सफाई तशी आमच्या सरावंडिंगाची साफ सफाई दवरपाक जाय प्लस आमी बरो व्यायाम करपाक जाय चलपाक जाय हें खूब इम्पॉर्टंट आनी जाय तितल्या प्रमाणान आमी उदक पिवपाक जाय करतले आमी सगळे आनी मोबायल कमी यूज करपाक जाय येस मोबायल खूब यूज करतात आमी कालूच एक भुरग्याक पळयलो म्हाज्या फुड्यान स्कुलाचो भुरगो येयल्लो ताका हेडगेवारां शिकता नांव घेना भुरग्याचें पूण ही वॉज गेटींग 92% कितली पडटाली 92 8वेक 92 पडला म्हणून आवयन ताका बरो फोन घेवन दिलो OnePlus आनी 9वेक आतां ताका बावड्याक कमी मार्क्स पडले 80 पडले आनी 10वेक आसा तो आतां 2 सब्जेक्टांनी फेल जालो सो आमकांय बाबा खूबदां वायट दिसता आमी कावन्सिलींग करपाक वयता आमी भुरग्यांक सांगपाक वयता पूण आवय बापायनी हें करपाक जायना की एक एवॉर्ड म्हणून प्रायज म्हणून मोबायल दिवपाचो ना भुरग्यांक अशें हांव आवय बापायकूय सांगता प्लीज कित्याक खूब यूज जाता मोबायलाचो आनी आमच्या भुरग्यांकूय खूब त्रास जाता हां थँक्यू तुमी सगळे आयकतले आनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ आर DHS हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या हेडमिस्ट्रेसीक स्विटी मांद्रेकर आनी टिचर्स आमचे सगळे हांगा आसलेले जमलेले आसा ते तेंच्यांनी आमकां हांगा आपयले हें आमकां एक सौभाग्य दिलें आमकां राखी बांदून घेवपाक आमकां एक ओकेजन केलें तयार थँक्यू एवरीवन हांव बरें तुमकां एप्रिशिएट करता तुमी आमकां हांगासर आयज हांगासर आपूण रक्षा बंधन दिनाच्या निमित्त आमकां तुमी हांगासर आपूण राखी बांदल्यो आमकां फेलिसिटेट केले व्हेरी थँक्यू मॅडम आनी भुरग्यांनी जशें तुमी जाणा हांव एक फायर अंकल तुमकां ऑलरेडी हांवें एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम घेतलेलो फाटीं तुमकां सांगलेलें गूड फायर आनी बॅड फायर सांगलेलें काय ना उजो आमकां जाय काय नाका फायर आमकां जाय काय नाका कित्याक जाय आमकां उजो कुकींग करपाक उदक तापोवपाक आमकां जाय पण तोच जर आमी उजो तेका आमी केअरलेसली यूज केलो जाल्यार कितें जाता तो आमकां हानी पावयता म्हटल्यार आमकां तो आमचें लुकसाण करता सो सदांच कितें करपाक जाय उज्या कडेन आमी फकाणां करपाक जायना आतां तुमी धाकटी आसा काय ना तुमी तुमचे टिचर्स तुमचे गार्डियन्स तुमचे पेरंट्स आतां चवथ येतली चवथी कडेन आमी कितें करता फुगट्यो लायता बॉम्ब लायता तुमी तितली तुमची अजून एज जावंक ना तुमी तुमचे पेरंट्स हेंच्या वांगडाच ते कितें ते करपाक जाय कळ्ळें तुमकां आनी बी सेफ आमी आसात फायर डिपार्टमेंट आर देर टू सेव यू
and protect you. Thank you. Thank you, madam. हॅपी रक्षाबंधन सगळ्यांक हां काय ना बरी शिकात तुम्ही सगळी व्हडली जाया आमच्या येना बरे ऑफिसर जावपाचे मागीर सगळ्यांनी शिकून करून हां आनी काय ना थँक्यू Kanchan Satartekar to kindly give a vote of thanks. गुड मॉर्निंग टीचर्स. नमस्कार मुलांनो, आज रक्षाबंधन हा सणाचा सोहळा आपण इथे आज साजरा केलो. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त करण्याची संधी मला मिळाली. यशस्वी कर्तृत्वात माणसाच्या सान्निध्याने विचाराने होते असे आदर्शवंत व व्यक्तिमत्व आज प्रमुख पाहुणे श्री भालचंद्र आमोणकर, श्री रुपेश सावंत, श्री डॉक्टर योगेश देसाई, श्री महादेव पेडणेकर, तुमच्या व्यस्त दिनचर्यातून वेळात वेळ काढून आपण इथे आलात. आपल्या उपस्थितीने कार्यक्रमाची खरोखर शोभा वाढली आणि आपल्या अमृतमयी विचारांचे विचारपुष्य आम्हास ऐकण्याची संधी मिळाली. शाळेच्या आपले खूप खूप आभारी आहे. तसेच कार्यक्रम यशस्वी मार्गदर्शन करणारे सर्व शिक्षकांचे व इथे उपस्थित पत्रकार श्री विलियम सर, पालक वर्ग यांचे या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते व सर्वांना मी धन्यवाद करते. थँक्यू सर. Thank you, teacher. या भाई हां ओके या हाँ बोलो. तुम्ही आता तुला या Myself, Anisha Anil Kalangutkar, a government teacher from PM Shri GPS Chitore, Panji, Goa. Today, we have celebrated one of the most famous festival of India. Raksha Bandhan is a bond of protection where a brother protects his sister. In fact, we also have our doctors, police, nurses, foresters, firefighters, air force, naval, soldiers, etc. who also protects us, working tirelessly day and night. Instead, with this thought, we decided to invite different officials from various departments in our school on the occasion of Raksha Bandhan. We did courier a Rakhi on behalf of our school with a thanking note to our Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. Apart from this, we have sent Rakhi to our armed forces at the Wagah border. All Rakhis were handmade by the students and the staff of our school. Thank you.